May I come in? वो क्या इतना बड़ा? Welcome, my dear students, to the ASRARIANOTES coaching classes. Today we are going to study Senior Zoology Intermediate Public Examination March 2024, Section 1. Very short answer question. 7 pages they give. As usual, I am going to give you 4 previous questions, out of which one will definitely be there in your upcoming board examination tomorrow. Right? Let us see what are those questions. सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? व्हाट आर 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स? ठीक है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन zygote will develop into embryo and embryo will develop into fetus in our mother womb, right? तो embryo के अतराफ जो मेम्ब्रेन्स फॉर्म होते हैं उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स क्या क्या है बेटा? सबसे पहला है एमनियन, जो कि एमनियोटिक कैविटी को सराउंड करता, then chorion, जो कि chorionic villi form करता. These chorionic villi will enter into the endometrium of the uterus of a mother. That process is called as implantation, and implantation occurs after 6th day of fertilization. ठीक है, चलिए. Then थर्ड वाला क्या है बेटा? Allantois. And फोर्थ वाला है yolk sac. क्या है बेटा? Yolk sac, right? Amnion, chorion, allantois, yolk sac. These are the 4 extra embryonic membranes, right? What is capacitation of sperms? अब sperms की capacitation क्या है उसके लिए अपन थोड़ी सी basic knowledge ले लीजिए. In male testes, we have seminiferous tubules. In seminiferous tubules, we have spermatogonia. These spermatogonia will develop into primary spermatocyte. Right? These spermatogonia will develop into primary spermatocyte. This primary spermatocyte is the largest sex cell, and this undergoes meiosis 1. What it undergoes? Meiosis 1, reduction division, and it forms 2 secondary spermatocytes. What it forms? 2 secondary spermatocytes. Right? These 2 secondary spermatocytes will undergo meiosis 2 division, and they form 4 spermatids. What they form? 4 spermatids. Right? These 4 spermatids will undergo modification, and they transform themselves in spermatozoa, what we call as sperms. Right? What we call as sperms. These transformation of spermatids into spermatozoa, this transformation of spermatids into spermatozoa, these are spermatozoas with the tails, what we call as sperms. This process of transformation of spermatids into spermatozoa is called as spermiogenesis. What it is called as? Spermiogenesis. Right? The whole process from the spermatogonia to the formation of spermatozoa, this whole process is called as spermatogenesis. What it is called as? Spermatogenesis. Right? It occurs in the seminiferous tubules of the male testes. It will take 74 days to complete the process of spermatogenesis. Right?
So the modification of spermatids into spermatozoa, the transformation of spermatids into spermatozoa is called as spermiogenesis. And these spermatozoa are attached to the cells of signiferous tubules. Now they are released. So the releasement of these spermatozoa from the cells of seminiferous tubules as free form, this process is called as spermiation. What it is called as spermiation. ये था बेटा आपका basic knowledge spermatogenesis का. In the male testis, in the seminiferous tubules, we have spermatogonia modified into primary spermatocyte. Primary spermatocyte is the largest sex cell, undergoes meiosis 1 and forms 2 secondary spermatocytes. These 2 secondary spermatocytes undergoes meiosis 2 division and forms 4 spermatids. Now these 4 spermatids are modified or transformed into spermatozoa with a tail, right? This modification or this transformation is called as spermiogenesis. Now the spermatozoa are attached to the cells of the seminiferous tubules. Now they get released. That releasement of the spermatozoa from the attached cells of the seminiferous tubules is called as spermiation. This whole process is called as spermatogenesis. That spermatogenesis takes place around 74 days, right? Now we are going to learn about the capacitation of sperms. ठीक है बेटा, तो अपन क्या पढ़े अभी स्पर्मेटोजोआ कैसा रहता है. स्पर्मेटोजोआ कंटेन्स हेड, राइट, देन नेक, देन कॉलर, राइट, देन मिडिल पीस, देन tail. So these spermatozoa contains head and nucleus. This is nucleus. This is your head of the spermatozoa, and we have a cap on the top of the head. This is called as acrosome, right? This is your neck. This is your collar, and this is your middle piece. And in the middle piece of a spermatozoa, you have what you have? You have mitochondria. Why? Because mitochondria are the powerhouses of the cell which secretes ATP, and ATP is required for the motility of sperms. सात समंदर पार में तेरे. तो sperms जब ejaculate होते हैं from the male penis into the female genital tract, तो sperms को female genital tract, vagina, cervix, uterus cross करते हुए fallopian tube में जाना पड़ता, because the site of fertilization is fallopian tube, that too ampulla, right? तो movement right fertility के लिए tail होगा, right? और उसके लिए एनर्जी होना, कौन प्रोवाइड करता है एनर्जी? माइटोकॉन्ड्रिया will provide the energy ATP. So mitochondria are present in the middle piece of the spermatozoa. ये था आपका spermatozoa का structure. तो spermatozoa female genital tract में enter होता after ejaculation, right? तो in the female genital tract acidity रहती, pH कम रहता, right? तो वो environment में modify होकर के fertilization के लिए आगे जाना changes होते. Some physiological changes occurs in the sperms, right? ऐसा नहीं है acrosome में tip of the head, right? ये इसके अंदर changes होते हैं, उसको बोलते हैं acrosomal reaction. Acrosomal reaction. Then acrosomal reaction के बाद cortical reaction होता, right? Then cortical reaction के बाद zonal reaction होता, cortical reaction के बाद zonal reaction होता. ये zonal reaction क्या है बेटा? अपन पढ़े ना ओव्यूम के ओवम के अतराफ zona pellucida सराउंडिंग में रहता, right? Proteinaceous layer. तो zona pellucida को टच करने के बाद
स्पर्म के हेड में चेंजेस आते, पहले एग्रोसोमल रिएक्शन, देन कॉर्टिकल रिएक्शन, देन जोनल रिएक्शन, अल्फाबेटिकल ऑर्डर दे दो ए सी जेड, राइट। उसके बाद क्या है, स्पर्म पेनिट्रेट करता जोना पेलिसुडा में और ओवम से जाकर के मिलता, मिलने के बाद फर्टिलाइजेशन होता, राइट। So in order to fertilize with the egg, with the ovum, with the secondary oocyte in the female genital tract, there are some physiological changes takes place in the sperms, such as acrosomal reaction, cortical reaction, or zonal reaction. Those physiological changes which are occurring in the sperms, where in the female genital tract, in the female genital tract, in order to travel the passage and gets fertilized with the egg, ovum, or secondary oocyte of the female body to form the zygote and embryo. That process is called as capacitation. ठीक है ना बेटा? स्पर्म ट्रैवल करके फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर एग तक पहुंच के फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइज होना पड़ता है। उसके लिए थोड़े से चेंजेस होते हैं स्पर्म्स के अंदर फिजियोलॉजिकल, कहाँ पे? फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में। उसको बोलते हैं कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म्स। ये था आपका सेकंड आंसर, ठीक है, डन। What in your views are the reasons for population explosion, especially in India? Population explosion माने हद से ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाना, ठीक है। चाइना, इंडिया वर्ल्ड के लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री है, ठीक है। हद से ज्यादा पॉपुलेशन, हद से ज्यादा क्यों है? रीजन फॉलोवर है। सबसे पहली चीज क्या है बेटा? हेल्थ फैसिलिटीज इंप्रूव हो गई अपनी, राइट। दूसरी चीज क्या है? डिक्रीज मोर्टैलिटी रेट। मोर्टैलिटी रेट माने डेथ रेट, लोग हम मरना हो गए, ज्यादा नहीं मर रहे आजकल, राइट। देन थर्ड वाला डिक्रीज मैटरनल मोर्टैलिटी रेट। मैटरनल मोर्टैलिटी रेट MMR means जो प्रेगनेंट लेडीज बिकॉज ऑफ द ब्रीच प्रेजेंटेशन और कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी के लिए डिलीवरी के टाइम पे आइदर बच्चा तो भी बचता या तो माँ तो भी बचती, राइट। इन सच केसेस मैटरनल मोर्टैलिटी रेट, माँ डेथ हो जाती, वो भी डिक्रीज हो गई बिकॉज ऑफ द हाई हेल्थ फैसिलिटीज, राइट। देन फोर्थ वाला डिक्रीज इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट। डिक्रीज इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट, राइट। इन्फेंट 1 साल के बच्चे को बोलते हैं, वो बच्चे भी आजकल ज्यादा नहीं मरे, भाई, बिकॉज दी हेल्थ फैसिलिटीज आर इम्प्रूव्ड, आयुष्मान भारत, राइट। सो दीज आर द 4 रीजंस फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया। What is amniocentesis? Name 2 disorders that can be detected by amniocentesis. Amniocentesis क्या है बेटा? अभी अपन पढ़े 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, एमनियन। तो क्या बोला था मैं? एमनियन कवर्ड द एमनियोटिक कैविटी कंसिस्टिंग एमनियोटिक फ्लूइड इन इट, राइट। तो जब डेवलपमेंट होता मां के पेट में, इन द वूम ऑफ मदर, राइट, fetus will get developed and it shows amniotic fluid. तो amniocentesis is nothing but a diagnostic procedure. क्या करते हैं? अल्ट्रासोनोग्राफी के अंदर स्कैन करते हुए एक डायग्नोस्टिक निडल, एमनियोसेंटिक निडल पियर्स करते मां के वूम में और एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल लेते। एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल के फीटल सेल्स को अब्सॉर्ब करते, उसके अंदर जेनेटिक्स रीड करते, राइट। डायग्नोस्टिक प्रोसीजर in which amniotic fluid is taken out and fetal cells are absorbed. Why? To detect any genetic disorder. उसको भी जेनेटिक डिसऑर्डर है क्या, वो चेक करने के लिए एमनियोसेंटेसिस करते हैं। क्या करते हैं? एमनियोसेंटेसिस नथिंग बट a diagnostic procedure in which amniotic fluid is taken out and fetal cells are absorbed in order to detect any genetic disorder. Name 2 disorders that can be detected by amniocentesis. 2 disorders के नाम बोलो। सबसे पहले
Down syndrome. Down syndrome क्या है बेटा? Trisomy of 21st chromosome. 21st chromosome की trisomy है. Right? Then second वाला Turner syndrome. टर्नर सिंड्रोम क्या है? मोनोसोमी है, राइट? सेक्स क्रोमोसोम्स की 45 XO. तो एक X क्रोमोसोम एब्सेंट का था फीमेल बॉडी में, राइट? So these are the two disorders that will be detected by amniocentesis. So these were the questions of 7 PSAQ. अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो. मेरे चैनल असरारिया नोट्स AS सीरीज बाय इमरान सर कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करो. मिलते हैं अगले वीडियो में विद 8 PSAQ. टिल देन टेक केयर. Monster.